This is All India Radio. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं बाजार विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं गौरा। Thank you, Vishal. Key domestic stock indices gain more than 1% amid positive global cues. Sensex closes above 54,850 points. Nifty settles above 16,350. Gold rises to trade around 51,000 rupees per 10 gram at MCX for June contracts. And Brent crude prices hover around $117 per barrel. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक का उछाल। सेंसेक्स 54,850 से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 16,350 के स्तर से ऊपर पहुंचा। एमसीएक्स पर जून अनुबंध वाला सोना महंगा होकर 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कर रहा कारोबार और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $117 प्रति बैरल के करीब पहुंची। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले शेयर बाजार की बात करते हैं। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज 1% से अधिक का उछाल आया। सेंसेक्स 54,850 के स्तर से ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 16,350 के स्तर से ऊपर जा पहुंचा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1.17% की वृद्धि से 632 अंक बढ़कर 54,885 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.13% की बढ़त से 182 अंक ऊपर 16,352 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.69%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.2% की बढ़त में रहे। The Sensex and Nifty today surged more than 1% amid positive global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed above the 54,850 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled above the 16,350 level. The Sensex climbed 632 points, or 1.17% to close at 54,885, while the Nifty rose 182 points, or 1.13% to finish at 16,352. In the broader market at the BSE, the mid-cap ended 1.69% up, while the small-cap index climbed 1.20%. In the Sensex pack, shares of 23 companies gained, while 7 logged losses. Tech Mahindra was the top gainer, as it added 4.1%. IndusInd Bank gained 3.2%. Wipro and Bajaj Finance both rose 3% each, and Mahindra climbed 2.7%. On the other hand, NTPC declined 2.4%, Bharti Airtel fell 1.2%, and Power Grid slipped 1%. In sectoral indices, 15 sectors logged gains, while 5 declined. The IT sector surged 2.4% and tech climbed 1.8%. Capital goods gained 1.7%, and the industrial index added 1.6%. On the other side, oil and gas plunged 0.9%, and the energy sector index fell 0.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive, as shares of 2,182 companies gained, while 1,153 fell. Shares of 113 companies remained unchanged. Punichi, these are choppy markets, and the experts are recommending investing, and you're also recommending in economy-facing sectors, and invariably to select large caps. So, despite several attempts to, come up, and the indices have failed to cling to the gains and succumbed repeatedly to global and domestic cues. So, though a choppy and volatile 2022 is expected due to this, do you think it will be offer us stock-specific opportunities? Yes, definitely. Like you said, that
2022 has been a difficult year for the markets after a very good performance in latter half of 2020, and then 2021 was of course very good for investors. 22 has been somewhat volatile. Like this week, we started off on a very weak note. The first 3 days were very weak, and then last 2 days we've seen big gains in the market. Right. So clearly this is a volatile market. I think the way forward for investors is to have a long-term view of the market, first thing, and to keep investing in a systematic manner. So they don't have to go all in and put in large sums of money at one go. But I think it will pay them well if they continue to invest in a systematic manner. It can be through an SIP in a mutual fund. It can be a systematic investment in a large cap stock, like you mentioned, whichever sectors they like. But I think it is a good time. The dip buying is good right now. It's very attractive valuations. So I think going forward, that should be a good strategy. Do you think, Puneetji, corporate, time-specific corporate investment in corporate bonds, 3-year period or whatever, there's a lock-in period, that is advisable? Right now, the yields on corporate bonds are very attractive. In fact, even on government bonds, which you call G-Secs, the government securities, right. The yields right now is about 7.4. Which is very attractive, and about a year back it was about 5.8, about 6. So investing in bonds is good because right now interest rates are very high. So those who want regular income, safe income, I think it is a good option. You mentioned 3-year lock-in for bonds. Actually, if you hold a bond, a fixed income investment for more than 3 years, then your gains are taxed at the LTCG, long-term capital gains of 10%. So it becomes very attractive even in terms of taxation. So yes, for people who are looking for absolutely safe investments, they can invest in bonds. These investments can be made directly in bonds, or they can also buy debt mutual funds. There also, I think the yields right now are close to 8%. So yes, it's a good option. So you're suggesting even if you have a lump sum amount of money, SIPs is one, so stagger them and, put them in different baskets. Corporate Absolutely. In any case, I think always from a point of view of managing risk, it is always good to spread your corpus across different asset classes. So of course, equities is one. One should invest in available schemes like Public Provident Fund, National Pension Scheme, government bonds, mutual funds. So these are various asset classes with different risk profiles and different return possibilities. For a healthy portfolio, I think it is important to have all these in your basket. Right. जी पुनीत जी, अगर आज हम सेक्टर वाइज बात करें तो आईटी सेक्टर में आज 2.4% का आईटी स्टॉक्स में उछाल आया है और आईटी सेक्टर पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ महीनों से हम कहें तो अपनी जो थोड़ी सी एक चमक जो थी उसकी फीकी पड़ी हुई थी। तो अब आपको लगता है कि आईटी सेक्टर का बॉटम बन चुका है और अब यहां से हमें गिरावट और देखने को नहीं मिलेगी, हमें अपवर्ड जाने को देखने को मिलेगा? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि इमीडिएट टर्म में क्या होगा, बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट ड्रिवन होती है और सेंटिमेंट कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। बट मैं ये कहूंगा कि यदि हम उस आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखें और ये देखिए वो कितने वो शेयर्स गिरे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अब वैल्यूएशन है काफी अट्रैक्टिव है। और हम देखिए जो अभी गिरावट आई थी आईटी क्षेत्र के शेयर्स में, वो गिरावट फंडामेंटल ड्रिवन नहीं थी, वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थी, क्योंकि वो शेयर्स में काफी हमने तेजी देखी 2 सालों में और इन्वेस्टर्स ने जब देखा कि काफी बढ़ गए हैं तो वहां पर सेलिंग आई थी एफआईआई के द्वारा और इसलिए वो गिरावट आई। अगर हम ना सिर्फ भारत में, अगर विश्व में देखें तो नैस्डैक जो कि सभी आईटी शेयर्स का एक तरह से आप कह सकते हैं मेका है, वहां पर दैट इज लाइक द इंडिकेटर इंडेक्स, तो नैस्डैक में करीब 38% का इस साल गिरावट आ चुकी है। तो वहां भी शेयर्स में काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि आईटी क्षेत्र के जो अच्छी बड़ी कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड हैं और वहां भी निवेश कर सकते हैं आप। लेकिन देखिए, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे अभी भी लगता है कि आईटी क्षेत्र में निवेश करना विल गिव गुड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। जी, ओवरऑल शेयर बाजार की बात करें तो जो ये वॉलेटिलिटी का जो दौर चल रहा है इसके लिए तमाम कई कारण जिम्मेदार माने जा रहे हैं, चाहे उनमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो या फिर एफआईआईज की बिकवाली
ये एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि मार्केट में जो गिरावट दिखाई दे रही है वो एफआईआईज की वजह से दिखाई दे रही है, जो वो बिकवाली कर रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार। तो अब अगर हम इस नजरिए से देखें तो जो फेड और आरबीआई की जो मीटिंग्स होने वाली हैं जून में, उसमें जो फैसले लिए जाएंगे, क्या वो फैसले इस गिरावट की दृष्टि से काफी अहम होंगे? क्या ये अब एफआईआई की बिकवाली में हम थोड़ा सा कमी देखेंगे? अगर बिकवाली थमे तो बाजार में थोड़ा सा उछाल आए। ठीक है, तो आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक जो रिजर्व बैंक और यूएस फेड का पॉलिसी, क्योंकि रिजर्व बैंक की मीटिंग नेक्स्ट वीक है और हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 25 से 30 या 35 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। तो ये करीब करीब ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है मार्केट में और मार्केट इसके लिए तैयार है। इसी तरह यूएस फेडरल रिजर्व जो अगले महीने एक सप्ताह के बाद उनका मीटिंग है, उसमें वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे, ये भी करीब करीब तय है। तो कुल मिलाकर मार्केट इस बात के लिए तो तैयार है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स और ऊपर जाएंगे। पर क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अभी तक पिछले एक वर्ष से, यदि भारत की बात करें हम, तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए की वो नेट सेलिंग कर चुके हैं भारत के अंदर इक्विटी मार्केट में। बहुत बड़ी सेलिंग है, रिकॉर्ड सेलिंग है, ऐसी हमने कभी नहीं देखी पिछले 25-30 वर्षों में। और इसके चलते हम, अच्छी बात यह है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उनकी जो निवेश रहा उससे मार्केट में काफी कुशल रहा, मार्केट में उतनी गिरावट नहीं आई। लेकिन पिछले यदि 2-3 दिनों का मैं आंकड़ा देखूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे 2-3 दिन क्यों देख रहे हैं, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। एफआईआई की जो सेलिंग चल रही थी, करीब 3 से 5 हजार करोड़ रुपया रोज वो सेलिंग करते थे भारत बाजारों में, पिछले कुछ दिनों में, आज की भी जो आंकड़े आए हैं, बहुत कम सेलिंग आई है, करीब 1000-1200 करोड़ की सेलिंग आई है। तो मुझे लगता है कि जो एफआईआई की सेलिंग है वो अब कम हो रही है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, आज जैसे म्यूचुअल फंड की हम सेलिंग देखें तो आज करीब 2500 करोड़ की बाइंग रही और इस वजह से बाजार भी ऊपर रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो इक्वेशन अब चेंज हो रही है और एफआईआई की सेलिंग, जैसे आपने कहा कि वो अब आने वाले समय में कम होनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ रहा है तो वो भी असर डालता है एफआईआई सेलिंग पर। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर एफआईआई की सेलिंग आने वाले समय में कम होगी और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स अगर स्ट्रांग रहती है तो डेफिनेटली बाजारों को उससे एक बल मिलेगा। जी, आपने जून में आरबीआई की जो प्रस्तावित एमपीसी की बैठक है उसमें आपने प्रमुख दरों में वृद्धि की कुछ संभावनाएं ऐसी व्यक्त की जा रही हैं कि आरबीआई की तरफ से प्रमुख दरों में बदलाव होगा और बढ़ोतरी होगी। तो मुद्रास्फीति, महंगाई जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है और आरबीआई के जो निर्धारित दायरा है उससे बाहर बनी हुई है लगातार कुछ महीनों से। तो महंगाई को काबू में रखने के लिए जो एक रिजर्व बैंक के सामने भी एक पशुपेश की स्थिति हम कह सकते हैं कि ग्रोथ को भी उसको देखना है और महंगाई को भी काबू में रखना है। तो ये एक बड़ी चुनौती आप मानते हैं कि कैसे संतुलन बना के आरबीआई इसको देखेगा? नहीं, डेफिनेटली देखिए, रिजर्व बैंक के सामने अपनी इन्फ्लेशन को नीचे रखना और ग्रोथ को मेंटेन करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। और देखिए, रिजर्व बैंक के हाथ में सारे पत्ते भी नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं जो रिजर्व बैंक के कंट्रोल के बाहर है, उस पर रिजर्व बैंक कुछ नहीं कर सकता। और तो उसको देखते हुए कि अभी तक जो रिजर्व बैंक ने कदम उठाए हैं, मुझे लगता है वो काफी अच्छे हैं। देखिए, इन्फ्लेशन 2 कारणों से आता है। एक तो जब डिमांड ज्यादा होती है, यानी मनी सप्लाई अगर ज्यादा है तो वो डिमांड को बढ़ाती है और उससे इन्फ्लेशन आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको असर डाल सकता है क्योंकि मनी सप्लाई कम कर रहे हैं, वो डिमांड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरे पहलू यह है कि जो सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो माल कम बन रहा है या इंटरनेशनल ट्रेड इस वक्त स्मूथली नहीं चल रहा, उसमें रिजर्व बैंक कुछ कर नहीं सकता और वहां भी बहुत बड़ी कारण है इन्फ्लेशन को लाने के लिए। तो मैं मानता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ पार्शियल सक्सेस तो ला सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा वो सख्ती का शायद नजरिया न रखें क्योंकि उससे ग्रोथ भी इफेक्ट होती है। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज बिफोर आरबीआई टू मेंटेन ग्रोथ व्हाइल कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। तो कुल मिलाकर इन सभी परिस्थितियों को देखें तो आपको क्या लगता है, बाजार में आम निवेशक के लिए क्या कुछ अभी भी अवसर आप देखते हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट का डेफिनेटली इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई से उसके ऊपर असर पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट यदि हम देखें तो उसका जो ताल्लुक है वो कॉर्पोरेट अर्निंग से रहता है। अगर कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी रहेंगी आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखें और जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स भी हैं, थोड़ी करेक्शन हुई है, आरबीआई ने भी ग्रोथ एस्टिमेट्स कम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम 7% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वर्ष।
तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी रहेंगी और डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका होगा इन्वेस्ट करने का. Puniji, we'll go in for a short break right now, but when we come back, we'd like to learn from you any particular sectors. What about the realty sector vis-a-vis inflation and how do we balance that? But right now we go in for a short break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से. लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान. अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग. डायल कीजिए 8700014242. नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242. We welcome all our listeners back. Puniji, coming to the specific sectors which you might suggest are good to invest in, particularly keeping in mind the realty sector also, because we've seen that it has taken a fall periodically over the last couple of weeks, an uprise and a fall. And, it's also linked a lot to many basic industries, the pull demand factor. And then there's inflation where people will need to purchase houses. So do you think investing in realty stocks, one, is an option? And if not, what are the other ones? So, realty sector is a very interesting sector. In fact, we must remember that for last 10 years, the realty sector has not done well. In fact, many realty companies have gone under. They have not been profitable. And so, clearly, this sector is now emerging from a very long period of downtrend. And it has been doing well lately. Usually, when we see that there's a rising interest rate cycle, the demand for realty could be affected, but fortunately that is not happening in India. We see very robust demand for real estate purchases by young people, and so I think that sector is doing well, and it will be wise to put some money into real estate sector because it's a high growth sector. I would say it's a slightly higher risk, higher return kind of a scenario, but yes, I think real estate is quite attractive even at these levels. The other sector I believe which will really do well going forward is the financial sector, because as our GDP grows towards $5 trillion mark, the industry which will really benefit significantly from it will be banking. All capex which is coming up, all new companies which are setting up new plants, I think all of them are going to need long-term capital, and banking sector is very well positioned for doing that. They had issues about capital adequacy a little while back, but right now all banks in fact are doing well, and for the first time in many years, in fact, PSU banks like State Bank of India, Canara Bank, all these banks are giving very handsome dividends. It shows that their capital base is very strong. So if you ask me, I think realty and financials appear to be really well poised. They're very attractive. The prices is very attractive. These sectors could do very well going forward. Right. Also, Punichi, when we talk of banking, and I think with businesses starting at the grassroots level, loan returns are becoming better. People are returning in, the credit ratings of people are also improving, the return ratio. When we talk of IT sectors, and in the IT sector, there are the mid and the small ones which have taken the maximum, push, less pull but more push towards the downward side in the last couple of months. And earlier we had spoken of investing in large caps. So do you think mid and small, particularly in the IT sector, are a good bet? So they are very risky bet, I would say. In fact, if you look at the companies which have taken a hit lately, it is the startups, and we hear stories about large number of layoffs in the startup ecosystem, and companies which are small companies are not able to raise capital. So, and typically that is, the startup environment is usually very challenging. The companies do not have the financial muscle to last a downturn. So I would say for people who are looking for safety, it is not a good place to be. However, people who have an appetite for higher risk and they expect to make higher gains, mid and small caps, particularly in IT, could be very attractive. So one has to really evaluate your own risk appetite and then decide. But yes, IT, I think long term, if you ask me, IT is going to be the centerpiece of any economic activity in any country. So no doubt that IT companies will do very well. But depending on your risk profile, you can choose the company that you want to invest in.
And also, I think at one level, do proper research, because everybody sees a boom and everybody jumps onto the bandwagon. So do your own research. You're right. I mean, the biggest hurdle to a good investment is not companies. It is your own knowledge and your own, research that goes into it. Unfortunately, I find large number of people invest in stocks without even knowing what the company does and knowing anything about the company. I would strongly recommend that all investors should familiarize themselves with the company they're investing in and whether they believe in it. So I think you're right. I mean, research and knowledge about the company is extremely important. I would strongly recommend all investors to do that. Right. और अब घरेलू मुद्रा के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया 1 पैसे की मामूली मजबूती से डॉलर के मुकाबले 77 रुपए 57 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर इंडेक्स आज बिना किसी बदलाव के 101.83 पर कारोबार कर रहा था। रुख करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। अमेरिकी शेयर बाजारों में कल आई तेजी के बाद एशियाई शेयर बाजारों में भी आज बढ़त का रुख रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 2.9% का उछाल आया और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1% चढ़ा। जापान का निकेई और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों 0.7% के लाभ के साथ बंद हुए। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.2% की बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.3% की मामूली बढ़त में चल रहा था। उधर फ्रांस का CAC 40 0.9% और जर्मनी का डेक्स 0.8% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। The US stocks ended higher yesterday after strong profit forecasts from companies. Waning concerns about aggressive interest rate hikes by the Federal Reserve also boosted investor sentiment. The Dow Jones Industrial Average Index added 1.6%, while the S&P 500 climbed 2% and the Nasdaq Composite surged 2.7%. Punichi, a little zoom out question. When we talk of now the world becoming more interconnected, we are all linked at the hip. We see that most of the markets across, whether it's the Asian ones or the US market, the Indian stock market, moving in a similar direction, up and down. And earlier international investment, used to see that if one area was up, the other was down and movement would happen. But do you think this will somehow change the way these international investors look at long-term investment across regions in the world? So you are right. I mean, in the last 20 years, what I have seen is that global capital has become truly global in a sense that it moves very fast. And there are fewer barriers to capital moving from one jurisdiction to another. And over the last many years, we have seen the growing clout of global capital moving into different economies. But I think this will continue because the way the capital markets are growing and they are being integrated, I think more and more international capital will determine how economies will do and how investments will happen. Having said that, we need to focus on domestic fundamentals. If you look at India fundamentals, I think India is now one of the best performing economies in the world. It is far outpacing even Chinese growth. Chinese growth is not expected to be more than 2 to 3% in the current year, and we could be doing 7% plus. So clearly, global fund managers, while they can move capital around very easily, they would find it very attractive to invest in countries like India. So I think global capital, yes, it moves fast, but it will still follow the principles of growth, of safety of capital. So it's good for us, and I think global capital will continue to favor us at least in the foreseeable future. Right. जी पुनीत जी, आपने चीन की अर्थव्यवस्था की बात की और आपने बताया कि भारत के मुकाबले चीन की अर्थव्यवस्था की जो गति है, वृद्धि है, वो पीछे रह सकती है। चीन जो है एक एशिया में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। चीन में जो इस वक्त जो एक अर्थव्यवस्था में जो आप ये गति में या अर्थव्यवस्था की वृद्धि में जो हम कमी देख रहे हैं, क्या उसके पीछे ये जो चीन की जो जीरो कोविड पॉलिसी है वही एक अकेली जिम्मेदार है या कुछ और फैक्टर्स भी आप देखते हैं जो चीन की अर्थव्यवस्था में इस समय थोड़ा सा सुस्ती दिखाई पड़ रही है? तो देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा इमीडिएट कारण है शॉर्ट टर्म में, वो कोविड जीरो पॉलिसी है। वहां शंघाई में, बीजिंग में लॉकडाउन चल रहे हैं तो नेचुरली एक्टिविटी कम है, लेकिन वो सिर्फ एक कारण नहीं है। चीन की जो पॉलिसीज रही है पीछे आप 1-2 वर्षों में देखें, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है वहां पर, एंट ग्रुप था, टेंसेंट होल्डिंग्स थी, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी थी, उन कंपनी के खिलाफ
वो ऐसी रेगुलेशंस लेकर आए कि सबकी ग्रोथ वहां बहुत कम हो गई। तो क्लियरली चाइना की जो पॉलिसीज, डोमेस्टिक पॉलिसीज रही है, और उसके साथ साथ मैं कहूंगा जो उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज रही है, पूरे विश्व में जहां भी उनके एक चीन का एक दबदबा था इकोनॉमिक स्फीयर को लेके, वहां देश जो है उनके साथ उनको वो डरते हैं उसके व्यापार करते हुए। तो क्लियरली चीन का जो मैं कहूंगा जो बेस्ट ईयर्स थे दे आर बिहाइंड अस। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीन की इकोनॉमी जो है करीब करीब $12 ट्रिलियन की है और भारत की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की है, यानी वो हमसे 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ग्रो। When we talk of this opportunity, Puneetji, which are some sectors where India can actually, pull up its socks and say, okay, right now, post-COVID and during COVID, China has, whether it's in terms of ethical, moral view of how the world sees it, and even in terms of their own production and their policies, they have suffered a little. Where can we take on? So clearly, China has ceded some space to Indian manufacturing policy. In fact, the buzzword in the world today is China +1 in manufacturing. And India, of course, is a very major claimant to that spot because we have the resources, we have a very strong domestic market, so we can absorb large production capacities ourselves. So I think we already are doing very well in services exports, IT exports, we are more than $350 billion annual exports. So what India needed was really an opportunity in the manufacturing sector. And I think given the policies of the government, particularly the PLI which has come in, I think India will make its mark in manufacturing in next 3 to 4 years. Great. And do you also feel, I think at one level, that government policies are in the right direction? Absolutely. In fact, there are a host of policies, and I think people have not really truly appreciated the challenge we had and how much headway the government policies have been able to make. I mentioned the PLI. Along with it, you have whole host of taxation reforms. You have other reforms which are happening. And I think that has really given a huge momentum to India's industry. And that's why I'm saying that next 3 to 4 years, right, I think we will begin to see those fruits. All pulling in the same direction. A quick look at the oil prices. Oil prices today fell marginally but were on track for weekly gains due to rising gasoline consumption in the United States in summer and also the possibility of an European Union ban on Russian oil. Crude prices logged losses of around 0.5% in intraday trade. Brent crude was trading at $117.14 per barrel, while WTI crude prices were at $113.49 per barrel when reports last came in. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून अनुबंध वाला सोना आज 115 रुपए महंगा होकर 50,985 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 830 रुपए की तेजी से 62,620 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,863.20 प्रति औंस पर था और चांदी भी बढ़त के साथ $22.40 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। पुनीत जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, 51,000 के स्तर के आसपास पहुंच रहा है एमसीएक्स पर सोना। ये शेयर बाजार की इक्विटी मार्केट्स की जो अनसर्टेनिटी है और जो महंगाई का जो एक इन्फ्लेशन का जो ये दौर चल रहा है, उसमें क्या सोने में निवेश इस समय बुद्धिमानी भरा निर्णय होगा? देखिए, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोने में निवेश हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी रिटर्न मुझे लगता है कि सोने में नहीं आएगी। एक तो डॉलर इंडेक्स जैसे से नीचे आएगा, गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। ये डॉलर इंडेक्स और गोल्ड हमेशा रिवर्स एक दूसरे से उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो गोल्ड बढ़ सकता है, पर बहुत बड़ी तेजी मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। पुनीत जी, कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And now, before we close, thank you, Puneetji. A reminder of the headlines. Key domestic stock indices gain more than 1% amid positive global cues. Sensex closes above 54,850 points. Nifty settles above 16,350. Gold rises to trade around 51,000 rupees per 10 gram at MCX for June contracts. And Brent crude prices hover around $117 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.